बेंगलुरु की हिलाल स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स मीट अल अमीन रेसिडेंशियल स्कूल होसकोटे में हुआ। हिलाल स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स मीट 6 दिसंबर बरोज हफ्ता हुए इस स्पोर्ट्स मीट में हिलाल स्कूल के चमकते दमकते स्टूडेंट्स ने शानदार मुजाहिरा पेश किया, अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का मुजाहिरा पेश किया। इंडियन नेशनल कबड्डी प्लेयर डॉक्टर राघवन केजी चीफ गेस्ट थे। स्पोर्ट्स इवेंट के आगाज से कबल हिलाल स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले इदारे के सेक्रेटरी मोहम्मद सैफुल्लाह को खिराज अकीदत पेश किया। हिलाल स्कूल के तलबा व तालिबात ने एक जानिब बेहतरीन मार्च पास्ट पेश किया तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बेंगलुरु साउथ वेलफेयर ट्रस्ट के नए सेक्रेटरी और मरहूम मोहम्मद सैफुल्लाह के फर्जंद मोहम्मद नियामतुल्लाह सोहेल, अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी इब्राहिम खान अफजल व दीगर मौजूद थे। चीफ गेस्ट राघवन ने अपने मैसेज में कहा कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है। स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में कम से कम एक स्पोर्ट्स को इख्तियार करें। एक मर्तबा कोई खेल सीखेंगे तो जिंदगी भर वो खेल साथ रहेगा। इससे जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर स्टूडेंट्स फिट रहेंगे। इस मौके पर हिलाल स्कूल के स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में अपने जौहर दिखाए और इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात को इनामात, सर्टिफिकेट, मेडल से नवाजा गया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा। झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो। Because begin. Answer. Get ready.
Former Secretary Mohammad Saifullah sir, who has been passed away on 14th of November. In the memory of him, we need to be maintain 1 minute silence. Thank you so much. From the class 9th standard, class leader and after reports leading from a friend as a commander. Now it passes to the red group. Red is the color of heat and blood, symbolizing energy, fighting spirit, strength and passion. Commander of two bars of first PUC and flag leader two class from second PUC. Thank you. Next, followed by the blue group is a calm and innovation, promoting creativity and working with ideas. Commander Tayrin from second PUC and flag leader Muskan. Next, followed by the green color is the nature, helping nature. Flag leader Sanya leading from the side. Last, yellow group, considered with the happiness and prosperity, Rukhaya and flag leader Sumaya. Now the boys with the marching with the salute and giving word of honor to the guests. Thanking each one of you. Boys, take your positions. Sit down, please. See, this is the US Day. You need to be cooperative. Spirit of sportsmanship and excellence displayed by our talented athletes. Mukhamata Farmai. It is my great pleasure to welcome you all our Hilal Annual Sports Meet 2025 and 26. Today we gathered here not just to compete but to celebrate the spirit of true sportsmanship, teamwork and achievement. Now I would like to encourage each participant to give their best and enjoy every moment of this event. First of all, I would like to a wholehearted welcome a distinguished chief guest of the day, are none other than a legendary Dr. Raghavan KG, Indian, his achievements, Indian kabaddi player and a gold medalist, Dr. Raghavan KG. APJ Abdul Kalam National Award as they retired from government duty as a Taluk Physical Education Officer from Hoskote. I salute for these great achievements, sir. Now I would Mr. Umair Sal.
I'd like to welcome a very young, energetic physical teacher, Mr. Somappa, who prepared the students for this event. Hilal Urdu School headmisters. We are happily opening Hilal School. Little bit loudly. Good morning. Okay. All the dignitaries on the dais and my dear children, it's a very nice and happy moment for me to share a few minutes with you all. So, already I came to know about the Saifullah sir. I'm really sorry. I am also very close associate with Saifullah sir. Very sorry about that. I have got bonding with this Al-Amin school more than 30 years. So here we are conducted so many state level competitions also of our department. Wholeheartedly, the Al-Amin campus is a sports campus according to my experience. Very cooperative with the food and field. Everything is provided by Al-Amin institution for our department sports up to the state level tournaments. Once again, I will thankful for all the support did by this institution. Today also I am very happy that I saw all the activities of you in a nice way as it is organized in a state level also. Just it is an inter-school competition, but the organization is up to the level of state. Those who are behind all these things, I would congratulate them that they have maintained the quorum and decorum of the sports events and all. So this is not the time to speak, I know that, because you are all ready to show your inhabited talent in a sports for the day itself. So I'm not saying anything, but you have to keep up that. There are two types of education is there in education institution. One is a curricular and another one is a co-curricular activities. Here whole of the day you are doing the co-curricular activities. Very important thing, because it is called as a motor learning. Once you learn anything in a motor way of learning, you will never forget that skills and all. For example, swimming or cycling, whatever it may be, you learn once, up to the lifelong you will be remembered and then doing that. That is the skillful learning the way. So these are the activities will influence the persons to become a strong and a good emotional balanced persons. So I will hope you will also keep all these things in mind and do well. Be 1 hour physical activities for the day, and then be healthy, happy, and become good citizens of this country. And with this, I will thanks Mr. Somana. He was worked here more than 11 years, I think, and a very good and very dedicated person in physical education. So I wish him to do the work in a nice manner. Thank you for calling me here and then given the opportunity to speak a few words in front of you all. Thank you very much to the Hilal institution management, principals and all the teachers and lovely children. Thank you. मैदान जंग में गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। इसके साथ हर साल की तरह इस साल भी हिलाल इंस्टीट्यूशंस का जो एनुअल स्पोर्ट्स है अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल मालूर रोड होसकोटे में मुनक़्क़द किया गया है। इस जलसे में तशरीफ लाकर इस जलसे की रौनक अफरोज को बढ़ाए हुए राघवन सर का मैं अपने जानिब से हिलाल मैनेजमेंट की जानिब से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस जलसे के मेहमान खुसूसी मोहम्मद सफीरुद्दीन सर, कैंपस ऑफ अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल मालूर रोड होसकोटे में, इनका भी अपने जानिब से हिलाल मैनेजमेंट की जानिब से अपनी दिल की गहराइयों से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
बेंगलुरु साउथ वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब सुहेल सैफुल्ला सर, मैं इनका भी अपने जानिब से और हिलाल मैनेजमेंट की जानिब से मैं इनका भी अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ज्वाइंट सेक्रेटरी and competition. Thank you so much, sir. Thank you, each one of you. Thanks a lot. And from 9th standard as a kabaddi player. As I give the instructions, okay? Right. We swear that we will take part in the inter-class Hilal institutions annual sports meet 2025-26, which governed them and with a desire to participating in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and college, for the glory of sports. Thank you. अच्छा कर रहे